Hello, my dear friends. Myself Anand. Welcome to all of you in the unique coaching classes. My friends, we shall know today about the Shakespeare. Come and start the video. And we know about the Shakespeare. William Shakespeare was born on April 23, 1564 in Stratford-upon-Avon, the son of Shakespeare and Mary Auden. He was probably educated at the King Edward VI Grammar School in Stratford, where he learned Latin and late Greek, and read the Roman dramatist at 18. He married Anne Hathaway, a woman 7 or 8 years his senior. Together they raised two daughters, Susanna, who was born in 1583, and Judith, whose twin brother died in boyhood, born in 1585. Little is known about Shakespeare's activities between 1585 and 1592. Robert Greene's a great worth of wit attributes to him as an actor and playwright. Shakespeare may have taught at school during this period, but it seems more probable that shortly after 1585 he went to London to begin his apprenticeship as an actor. Due to the plague, the London theatres were often closed between June 1592 and April 1594. During that period, Shakespeare probably had some income from his patron, Henry Wriothesley, Earl of Southampton, to whom he dedicated his first two poems. Venus and Adonis is a long narrative poem in 1593 and The Rape of Lucrece in 1594. The former was a long narrative poem depicting the rejection of Venus by Adonis, his death, and the consequent disappearance of beauty from the world despite conservative objection to the poem's glorification of sensuality. It was immensely popular and was reprinted 6 times during the 9 years following its publication. In 1594, Shakespeare joined the Lord Chamberlain's Company of Actors, the most popular of the companies acting at court in 1599. Shakespeare joined a group of Chamberlain's men that would form a syndicate to build and operate a new playhouse, the Globe, which became the most famous theatre of its time. With his share of the income from the Globe, Shakespeare was able to purchase new place, his home in Stratford. While Shakespeare was regarded as the foremost dramatist of the time, evidence indicates that both he and contemporaries looked to poetry, not playwriting, for enduring fame. Shakespeare's sonnets were composed between 1593 and 1601. Though not published until 1609, that edition, the Sonnets of Shakespeare, consist of 154 sonnets and written in the form of 3 quatrains and 1 couplet, that is now recognized as Shakespeare. The sonnets fall into two groups. 126 sonnets are addressed to beloved friend, a handsome and noble young man, and sonnets 127 to 152 to a malignant but fascinating dark lady who the poet loves in spite of himself. Nearly all of Shakespeare's sonnets examine the inevitable decay of time and the immortalization of beauty, love in poetry. In his poem and plays, Shakespeare invented thousands of words, often combining or controlling Latin, French, and native roots. His impressive explanation of the English language
according to the Oxford English Dictionary, includes such words as arc, villain, birthplace, blood-sucking, and courtship, dewstrap, and many things. Shakespeare wrote many than 30 plays. Means Shakespeare wrote 37 plays. One plays, one play is in incomplete. Pericles. दोस्तों, शेक्सपियर जी बहुत से प्ले लिखे और उस प्ले में जो है उन्होंने जो पेरिकल्स लिखा हुआ था, वो पेरिकल्स के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, जो वो उनका इनकम्प्लीट रह गया। और जिस थिएटर की बात हम लोग कर रहे थे, वो थिएटर क्या था? वो थिएटर जो है ग्लोब थिएटर था, जो 1599 में बना था और 1613 में वो जो है जल गया था। लेकिन दोस्तों 1614 की बात करेंगे तो उसमें फिर से उन्होंने क्या किया था, उसको रिबिल्ड कराया और उसके 2 साल बाद ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा। ये तो मैंने कुछ थोड़ा सा पिछला बताया कि पिछला में क्या क्या है। लिखा है दोस्तों, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये लाइन दोस्तों हैमलेट से ली गई है। इसमें कौन इसको बोल रहा है? मार्शेलस ने ये बात बताई है। दूसरा क्या है दोस्तों? दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलन। ये लाइन कहाँ से ली गई दोस्तों? ये हैमलेट से ली गई है। आगे दोस्तों है, डाउट दो द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डन मूव, डाउट थ्रू टू बी ए लायर बट नेवर डाउट आई लव। ये लाइन कहाँ से दोस्तों? हैमलेट से है। नेक्स्ट क्या है? फार देर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये लाइन हैमलेट ने कहा था। किससे? ये जो है रोजन जो है क्रंच। आवर थाट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, हु स्पीक्स दिस। ये लाइन किसने कहा? ये प्लेयर किंग इन हैमलेट, माने प्लेयर किंग ने कहा था हैमलेट में। लेट द गोल्ड जेड विंस आवर वेयर्स और अनवेरी वेयर डज इट अपीयर। ये लाइन कहाँ से दोस्तों है? हैमलेट से। दोस्तों हैमलेट की जो लाइनें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइन को बिल्कुल आप ध्यान से देखें। ओ हैमलेट दो हस्ट चैप्ट माई हार्ट इन ट्वेन, हु स्पीक्स। ये कौन कहा था? क्वीन गर्टिट्यूड। फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉक द डेविल और थ्रो हिम आउट विथ वंडरस करा पोटेंसी, हु इज स्पेकन। तो ये दोस्तों हैमलेट ने ही कहा था। आगे दोस्तों है कि माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर होम डज हैमलेट स्पीक। ये कौन कहा? किंग क्लॉडियस ने कहा था। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, हु स्पीक्स। ये दोस्तों कौन कहा? ओफिलिया ने कहा था। आगे दोस्तों है कि हु सारोज केम दे कम नॉट सिंगल स्पेंस बट इन जो है बटालियन। ये किंग क्लॉडियस ने कहा था। वेयर इन ऑफेंस इज फर्स्ट द ग्रेट एक्सफॉल, हु स्पीक्स। ये भी किंग क्लॉडियस ने कहा था। फॉर गुडनेस ग्रोविंग टू ए प्लीजरी डाइज इन हिज ओन टू मच, हु स्पीक्स। तो ये भी दोस्तों कौन कहा? किंग क्लॉडियस ने कहा था। नाउ गेट यू टू माई लेडी चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेन एंड इंच थिक टू हिज फेवर, सी मस्ट कम मेक हर लॉप एट दैट, हु स्पीक्स। हैमलेट ने। ये लाइन हैमलेट से दोस्तों ली गई है। ये कौन बोला था? ये भी हैमलेट ने ही बोला था। देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, हु स्पीक्स। ये भी दोस्तों कौन बोला? ये लाइन हैमलेट की है और हैमलेट ने बोला भी है। फियर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेयर डज इट अपीयर। ये मैकबेथ की लाइन है दोस्तों। उसके बाद है एट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम,
हु अटर्ड, ये दोस्तों कौन कहा? लेडी मैकबेथ ने कहा था। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन थर्ड वीडियो मैं जल्दी दूंगा। मैं दोस्तों यही कहूँगा, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा कर देखिए। वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ा उसको बढ़ा कर देंगे तो जो लेटर है आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखते रहें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।